Welcome friends to my channel. Today we will study about Indian geography. I hope you will like it. आपको पसंद भी आएगा और साथ ही कुछ सीखने को भी मिलेगा. So let's begin. So we'll start with the basic concepts of latitudes and longitudes. So first we'll start with what is known as your latitudes. Latitudes are nothing but imaginary horizontal line. As you can see, these are horizontal lines, and इसी वजह से they are also known as parallels. ठीक है? Parallels. क्यों? Because they never intersect. कभी एक दूसरे को काटते नहीं है. इस डायग्राम में आप देख सकोगे lines. These are parallels, and these are also your concentric circles. Concentric circle means the circles which have the same center. The circles with the same center are called concentric circles. Fine, they never intersect. Also, what you see here, that if this is the longest latitude, the longest equator latitude is known as इक्वेटर. ओके, यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्थ पोल, एंड दिस इज आवर साउथ पोल. This is our south pole. So what you see is from equator till north pole is our northern hemisphere. Northern hemisphere. Fine. From equator to south pole is our southern hemisphere. Fine. Okay, so we have seen here that these are parallels, that is, these are imaginary horizontal lines, these are concentric circles, and then that's why they are known as parallel. We have seen which is equator, that is 0 degree जो हमारा latitude है उसको हम equator कहते हैं, and 90 degree north latitude उसको हम क्या कहते हैं, north pole, and 90 degree south latitude उसको हम कहते हैं south pole. So one important latitude which is very important for India, that is your 23.5 degree north latitude. Fine. So that is known as your Tropic of Cancer. आपको gradually पता चल जाएगा कि why this is important for us. So this is our 23.5 degree north latitude. जो south में है 23.5 degree south latitude, that is known as your Tropic of Capricorn. Fine. So ये सारे latitudes हमें minimum हमें याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, समझ आ गई. सो इफ द क्वेश्चन इज विच इज योर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, आपको बोलना है दैट इज इक्वेटर. वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड. फाइन. ओके. longitudes are imaginary vertical lines. ठीक है, and here what is important is जैसे हमने latitude में देखा था, they are complete circles, but in this case these are not complete circles, these are half circles or semicircles. Starting from north pole to south pole. So यहाँ पे भी आप देख सकते हो, this is your north pole, and this is your, here we have the south pole. So they run from the north pole to the south pole, north pole से लेकर south pole. So they are semicircles. So there are 360 lines, that is starting from one side to the other. They are half circles. So this 0 degree longitude उसको हम कहते हैं क्या, prime meridian. The 0 degree longitude is known as your prime meridian. So अगर पूछा जाए कि which is the longest longitude,
So is the question correct? बिल्कुल नहीं, because they are equal in length. They are equal in length. ठीक है, समझ आ गई डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? ओके, वेरी गुड. सो इस कंसेप्ट को यूज करके what we will do is we'll look into the next part. Okay, so first you see that is the northernmost point of India. What is it? The northernmost point of India, that is known as Indira Col over here. So this is your Indira Col. This is situated where? This is at Ladakh. Okay, so the latitude which passes through this is your 37 degree 6 minutes north latitude over here, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. ये हो गया हमारा mainland. Mainland means the entire landmass which we are talking about. Okay, so if we go to the southernmost tip, that is here. Here we have the southernmost tip of Indian mainland. So इसे हम कहते हैं Cape Comorin. Where is it located? It is at Kanyakumari at Tamil Nadu. फाइन. सो ये कैसे याद रख सकते हैं? के कन्याकुमारी हो गया, सो इधर हो गया केप कॉमरिन, सीसी, के सीसी. सो द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. समझ आ गई? सो इंदिरा कॉल कैसे याद रखेंगे? आर्मी में बहुत हाई पोजीशन होता है कर्नल का, विच वी कॉल ऑल्सो कॉलोनल. सो दैट कर्नल इंदिरा कॉल, उससे हमें याद रखना है नॉर्दर्न मोस्ट टिप ये है, एंड द लैटिट्यूड विच पासिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ऑल्सो नोन एज योर केप कॉमरिन. ये हो गया मेनलैंड की बातें. इफ आई ड्रॉ द मेनलैंड हियर ऐसे, सो ये हो गया हमारा इंडिया का मेनलैंड. ठीक है, सो मेनलैंड इज सराउंडेड बाय water on all the three sides. That's why it is known as the southern India. Southern part, this is known as our Indian peninsula. So on the eastern side, what we have is, we have the Bay of Bengal. We have your Bay of Bengal. Fine. On the western side, we have the water body which is known as Arabian Sea. ये सबको पता है. और सदर्न साइड में वी हैव इंडियन ओशन. फाइन. सो दैट्स व्हाई द सदर्न इंडिया इज आल्सो नोन एज इंडियन पेनिनसुला. पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब है अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द थ्री साइड्स. सो इंडिया का मेन लैंड छोड़कर इंडिया के पास आइलैंड्स है. क्या क्या आइलैंड्स है? On the eastern side, that is Bay of Bengal, we have Andaman Nicobar Islands. Andaman Nicobar Islands. Fine. And on the western side, we have, what we have here is this one. This is the Lakshadweep Island. Lakshadweep Island. Okay. So what we do is, we need to understand. So mainland का southern most tip, as I said, that is Cape Comorin और कन्याकुमारी तमिलनाडु. बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाए, अगर इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इंडिया के पास वो सारे फीचर्स हैं जो एक कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, बट इट इज स्मॉलर, कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, सो इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. ठीक है, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जाए तो हमारे पास मेनलैंड as well as the islands, this we will have to consider. ठीक है, so islands का जो southern most point है, जो अंडमान निकोबार में है, that is at your 6 degree 4 minutes north. That means the latitude passes through this point is your 6 degree 4 minutes north latitude. ऐसे. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अच्छे से समझ लीजिए, इंडियन मेन लैंड का सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है? दैट इज योर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पासिस थ्रू इट, इट इज योर केप कॉमरिन. अगर पूछा जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है, सो यू विल हैव टू आंसर दैट इट इज the point which passes through the latitude 6 degree 4 minutes north. It is known as your Indira point. I'm writing it here. Okay, Indira point. This is also known as
your Pygmalion Point, or Parsons Point. Fine. So Indira Point or Pygmalion Point or Parsons Point, this is the southernmost tip of Indian subcontinent. I hope I have made myself clear. बात समझ आ गई? ठीक है. Let's look into the next slide, and next thing what we have to understand here is, see what I was trying to say over here, that is, you see, ये जो हो गया 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये हो गया इक्वेटर, दोनों में अंतर कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दैट इज योर 876 किलोमीटर्स ओनली. मतलब आपको ये बात समझना होगा कि इक्वेटर से सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज जस्ट 876 किलोमीटर. मतलब न्यूमेरिकली रिवर्स कर दीजिए, 678 को आप 876 कहिए, ठीक है? 876 मतलब इट्स इवन लेस देन 1000 किलोमीटर्स. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द peninsular India does not have too much of a variation in seasons. इसका मतलब क्या है? सीजनल वेरिएशन ज़्यादा नहीं है. मतलब नॉर्थ इंडिया में हमें जैसे अच्छे से समझ आता है कि दिस इज़ द समर सीज़न के ये फीचर्स हो गए, और विंटर सीजन के ये फीचर्स हो गए. समर सीजन, विंटर सीजन, दिस काइंड का जो सीजनल वेरिएशन है, डिफ्रेंसिएशन है, ये आपको साउथ इंडिया में अच्छे से नहीं समझ आएगा. इसका मतलब आप अगर चेन्नई में जाइए, इवन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ विंटर, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड होती है, हम लोग स्वेटर्स, वूलन्स जो मिलता है पहन लेते हैं. पर साउदर्न इंडिया में आप अगर जाइए, आपको शायद फ़ैन चाहिए भी हो सकता है, एसी नहीं चाहिए होगा, पर फैन आपको लग भी सकता है. सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ चिल्ली विंटर, वैसा कुछ है नहीं. चिल्ड विंटर वैसा नहीं है. सो दो रीजंस हैं इसके. एक तो कंटिनेंटल इफेक्ट, वो है चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज. सो जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का इफेक्ट है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ठीक है? एक तो इस इफेक्ट के कारण से यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, एंड दूसरा इज नियरनेस टू द इक्वेटर. द अदर इज योर नियरनेस टू द इक्वेटर. Fine. Because of these two reasons, the southern India or the peninsular India mainly, it doesn't have any specific climate change. Okay, बात समझ आ गई? Main latitude which passes through India and divides it into almost two halves. Okay, it divides India into almost two halves like this. Fine. This is our Tropic of Cancer latitude. बात समझ आ रही है? So Tropic of Cancer क्या है? Basically it's a latitude which divides India into almost two halves. Fine. So here we are, what is known as the north of India, north of Tropic of Cancer, this is called your North India, and the part which is below Tropic of Cancer, that is your South India. Fine. ठीक है. सो देयर इज दिस डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक और स्पेशलिटी ये है कि इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ्स क्लाइमेटिकली. मतलब नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने बताया, देयर आर वेरियस क्लाइमेटिक डिविजन्स क्लियरली और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. साउथ इंडिया में वैसा कुछ डिवीजन नहीं है. बात समझ आ रही है? ओके. सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस passes through 8 states. You will have to remember it. It passes through number of states, that is your 8. This is number of states. You look over here, this is your 8. Okay. सो हमें ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं कि विच आर द स्टेट्स, और उनको सीरीज़ में बिठाना होता है. सो आप किसी भी लेवल पे हो, स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स एंड विच आर द स्टेट्स इन सिक्वेंस. सो मैंने यहाँ पे
वेस्ट से लेकर के फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है जो स्टेट्स जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज गुजरात, देन हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन आ गया वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम. सो कैसे हम सेट करेंगे इसको? फर्स्ट व्हाट इज द स्टेट, विच स्टेट इज दैट? फर्स्ट हो गया आपका गुजरात. लेट मी टेक सम अदर कलर टू डिस्टिंग्विश इट. फर्स्ट इज योर गुजरात, ओके. देन क्या हो गया? राजस्थान. देन हो गया आपका मध्य प्रदेश. देन कम्स योर छत्तीसगढ़. देन इज योर झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल. देन यू हैव त्रिपुरा एंड देन यू हैव मिजोरम. सो ये सीक्वेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने दे सकते हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट एज वेल. From your northernmost point till your southernmost tip, ठीक है. This is your the length in distance or in kilometers, that is your 3214 kilometers, ठीक है. So this is your 3214 kilometer. Fine. Okay, so we'll start with east to west extent of India. So easternmost extent हो गया ये point, आप देख सकते हो clearly. Easternmost point is this over here. So you see here, this place is known as your Kibithu. Kibithu, which is at Walang town, Anjar district in Arunachal Pradesh, ठीक है. The longitude, now we will talk about longitude. Longitude के बारे में बात करेंगे, which passes through this point. This is your 97 degree 25 minutes east. क्यों east लिखा है मैंने? I'll explain, don't worry. Then on the westernmost side we have 68 degree 7 minutes east longitude passing through the westernmost point of India, which is at Guhar Moti at Kutch district in Gujarat. Fine. So हमारा westernmost extent और easternmost extent हो गया यहाँ पे ख़त्म. Just you need to know that the distance between the westernmost to the easternmost extent, this is your 2933 kilometers. Fine. I hope I have made it clear. समझ आ गई बात? Okay. If this is your Tropic of Cancer, if this is the Tropic of Cancer, I told you मैं short में लिख रही हूँ, ठीक है. Tropic of Cancer, this is our equator and this is the North Pole. So ये सारे हो गए हमारे latitudes. So therefore as Tropic of Cancer divides India into almost two halves, and here are the longitudes. Longitudes क्या क्या है हमारा? I told you before. So one is, this is your 0 degree prime meridian, जो longitude है that is known as prime meridian. और उसके बाद which are the eastern and your western extents? Which are they? Tell me. 68 डिग्री 7 मिनट्स जो ये है, याद आ रहा है कुछ? और ये हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स. सो बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर दिस लॉन्गिट्यूड्स, दिस आर टू द ईस्ट. क्या है? ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. देयरफॉर व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. we call the coordinates as east. that is ये हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और दूसरा ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट हो गया 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. Similarly this ones which is your above, that is your 8 degree 4 minutes north या फिर 6 degree 4 minutes north या फिर 37 degree 6 minutes north, ये सब हम क्यों कहते हैं? because it is on the north of the equator. Fine. So north of equator, therefore those are, we call it north. That is understood. So northern hemisphere or eastern hemisphere में somewhere India is located. So we can mark the point position here. जैसे ये Tropic of Cancer हो गया, this will divide India into virtually two halves. So ये हो गया हमारा India. ठीक है.
दिस इज़ लाइक इंडिया, रफ कुछ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हो गया इंडिया। तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। सो इंडिया लाइज इन द, दैट मेक्स द सेंस, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर नॉर्थ दे रहा है सिर्फ तब भी ये करेक्ट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यस इट इज करेक्ट। अगर ईस्टर्न दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम का कॉन्सेप्ट और जीएमटी जो कहा जाता है। सो जनरली यू सी द 0 डिग्री मेरिडियन जो मैंने पहले भी बोला था, दैट passes थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच हियर। दिस इज़ वेरी नियर टू लंदन, इट इज़ एट यूके। सो यहाँ से जो पास करता है दैट इज़ योर 0 डिग्री मेरिडियन। ओके, सो यहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, सो रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट लंदन, जहाँ पे जो मीन सोलर टाइम वो देखा जाता है कि व्हाट इज़ द मीन सोलर टाइम, मतलब दोपहर के बजे जब सनलाइट वहाँ पे होता है, इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे टाइम क्या है, उसी के हिसाब से थ्रू आउट द वर्ल्ड वी कैलकुलेट द टाइम। सो इंडिया का लोकेशन इज हियर, इंडिया इज लोकेटेड हियर, राइट? सो एज यू कैन सी like the earth rotates from west to east, we all know that anti-clockwise rotation. So like here we have Japan, so Japan में सनराइज पहले होगा, उसके बाद आ गया इंडिया, ठीक है, फिर आ गया हमारा यूरोप, लास्ट में आ गया हमारा यूएस यहाँ पे। सो 4 कंट्रीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं हम समझने के लिए। सो फर्स्ट है जापान में सनराइज हो रहा है, सो यहाँ पे मॉर्निंग हो रहा है जब, तब जस्ट द रिवर्स यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पे नाइट, इवनिंग एंड नाइट टाइम हो रहा है इंडिया में, जब बाकी कंट्रीज़ में। तो जब इंडिया में मॉर्निंग हो रहा है तब भी यहाँ पे इट्स नॉट कम्प्लीटली मॉर्निंग। सो ये हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे जो सोलर टाइम है उसके हिसाब से हम बताते हैं। सो अगर द कंट्रीज आर ऑन द ईस्ट ऑफ योर ग्रीनविच, फाइन, they are known called ahead time, we call it ahead of greenwich mean time, ahead of GMT, ठीक है। सो यहाँ पे we denote it with plus, we denote it with plus क्योंकि टाइम पहले चल रहा है, am I clear? we denote it with plus। जो वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में what do we do is, वेस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सनराइज बाद में होता है, सो वी कॉल इट बिहाइंड, बिहाइंड GMT, फाइन। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इट इज़ बिहाइंड GMT, और इसे हम माइनस में डिनोट करते हैं, माइनस, फाइन, समझ आ रहा है? सो अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि यूरोप में सुबह के 12 बज रहे हैं, इट इज़ 12 AM इन द मॉर्निंग एट यूरोप और ग्रीनविच, व्हाट इज़ द टाइम इन इंडिया? आप सोचो, सोच कर बताओ। सो इंडिया में तो सुबह पहले हो चुकी है एंड वी आर अहेड ऑफ GMT, सो इट विल बी बिफोर, ठीक है। सो इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी राइट प्लस हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड प्लस 5.5 hours, 5.5 hours, so we are 5.5 hours ahead of GMT। सो सुबह के 12 अगर यहाँ बज रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया में 5:30, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, 5.5 hours ahead of GMT। सो हाउ वी कंसेप्चुअलाइज दिस इज, ये एक और लॉन्गिट्यूड है जिसे हमें समझना पड़ेगा, दैट लॉन्गिट्यूड passes through almost the center of India and it divides India into western and eastern India, ठीक है। उसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ISM, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, Indian standard meridian, I'm writing it here, Indian standard meridian,
फाइन. So Indian Standard Meridian passes through almost this longitude. ये एक longitude है. This passes through almost the middle of India, divides India into eastern and western part. Okay, fine. So based on Indian Standard Meridian, which is at 82.5 degree east. Again, we say east because it is on the east of Greenwich. So it is 82.5 degree east. Fine. This meridian determines the इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडिया में टाइम क्या होगा. क्लियर, बात समझ आ रही है. स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस इज योर 5.5 hours अहेड ऑफ योर जीएमटी. सो जीएमटी वहाँ पे जो भी टाइम होगा उससे 5.5 घंटा हम लोग पहले चलेंगे. सो द प्रॉब्लम इन इंडिया इज, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस व्हाट वी हैड इज, वी हैड 2 टाइम जोन्स. ठीक है, ये हो गया इंडियन पेनिनसुला. वी हैड 2 टाइम जोन्स. एक था ये बॉम्बे टाइम्स एंड दूसरा था ये कैलकाटा टाइम्स. बिकॉज यू सी, बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 2933 किलोमीटर्स, जो मैंने पहले भी बताया था. व्हाट इज इट? 2933 किलोमीटर्स. सो बेस्ड ऑन दिस, ये डिस्टेंस भी कुछ कम नहीं है. एंड वी ऑल नो कि अरुणाचल प्रदेश दैट लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे सनराइज पहले होता है, और गुजरात जो एकदम वेस्टर्न हिल में है, यहाँ पे सनराइज लेट होता है. तो बेस्ड ऑन दैट ड्यूरेशन, इस डिस्टेंस में बिटवीन दिस 2 स्टेट्स देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1 hour 56 minutes, जिसे हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 hours भी कहते हैं. ठीक है, सो इतना गैप है. तो एक हो गया, मतलब 2 घंटा पहले सुबह हो जाता है, 2 घंटा पहले शाम हो जाती है यहाँ पे. सो देयर फॉर योर दिस डिस्टेंस दैट इज 2933 किलोमीटर, इट प्लेज अ रोल. फाइन. सो पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे 2 टाइम रहता था. एक हो गया तुम्हारा आपका कैलकाटा टाइम जोन, कैलकाटा टाइम जोन, और दूसरा था बॉम्बे टाइम. बट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, एंड मर्ज करके इट बिकेम व्हाट, योर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST. दिस इज बेस्ड ऑन योर Indian Standard Meridian, which passes through almost the middle of India. But there is still a heavy demand कि 2 different time zones किया जाए. और एक दूसरा चीज़ यहाँ पे जो जानना है हमारे पास हमें, कि आसाम में there is something called your चाय बागान टाइम. चाय बागान टाइम. फाइन. चाय बागान टाइम, दिस इज योर 1 hour ahead of your what, 1 hour ahead of your Indian Standard Time. ठीक है, am I clear with this? Okay, so what you need to know here, कि this Indian Standard Meridian, this passes through 5 states. This passes through 5 states. Like I said, Tropic of Cancer that passes through 8 states. It passes through 5 states. Which are the states? We need to know it sequentially. एक हो गया यूपी, दूसरा हो गया MP, देन हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़. ओके, उसके बाद उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश. फाइन. सो दिस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू दिस 5 स्टेट्स. साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि दैट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is a latitude, right, 23.5 degree north latitude, and Indian Standard Meridian which is a longitude, which is your 82.5 degrees east, right, meridian. So इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है जो यहाँ पे है, that is at your कोरिया, that is at कोरिया. This is in छत्तीसगढ़. फाइन. दिस इज इन कोरिया, दिस इज एट छत्तीसगढ़. क्लियर. सो ये दोनों मेरिडियंस मीट करते हैं कहाँ पे, एट छत्तीसगढ़. ओके, सो द लास्ट टॉपिक व्हाट वी विल स्टडी हियर इज द शेप ऑफ इंडिया. सो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है दैट इज योर व्हाट, ट्रायंगुलर इन शेप. द पेनिनसुलर पार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप, बट द रेस्ट ऑफ इंडिया उसे हम कहते हैं क्या, वी कॉल इट
quadrangular, that is, let me write down the spelling for you, that is your quadrangular, that is quadrangular in shape. ठीक है, समझ आ गई? Okay, so we come to the end of the video. In case you have anything to say for betterment or anything, please let me know through your comments. So please like, say, share and subscribe. Thank you so much.